Hello everyone. Today we will be discussing about the various sources of Indian Constitution. Now as we can see, the Indian Constitution has borrowed many different things from other constitutions of the world, and that is why the Indian Constitution is called the borrowed constitution. So we will be discussing about various provisions in the Indian Constitution that were incorporated from the constitution of different countries. So let's start. So, first and the foremost source of the Indian Constitution is the Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935. This can be called as a blueprint of the Indian Constitution and the most important source of Indian Constitution. इस एक्ट में जितने प्रोविजंस थे उनको एज इट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था या कॉपी कर दिया गया था. सो the most important source of Indian Constitution, if the question is asked like this, then you should select this Government of India Act 1935. This act, which was passed before the independence by the Britishers itself, is the most important source of Indian Constitution. Next we'll be discussing about other countries' constitution. First of all, we will start with the Constitution of Britain. Britain से जो चीज़ें हम लोगों ने borrow की है, that is the rule of law, which has been propounded by Dicey. Secondly, the single citizenship. Thirdly, parliamentary form of government. Fourth, office of the Comptroller and Auditor General. And lastly is the law-making procedure. So these 5 things have been borrowed from the Constitution of UK. Next comes the Constitution of America. Now from America we have incorporated very important provisions, some very important provisions. First is the fundamental rights. In America, the Bills of Rights was introduced in 1215. And keeping that in mind, our founding fathers have incorporated Part 3 to the Indian Constitution, which deals with fundamental rights. Next comes the concept of judicial review. The judicial review concept was first propounded in USA itself, and it is not found in UK till date. So we have incorporated the concept of judicial review in our Constitution from USA only. Next is the independence of judiciary. In India, as we all know, the judiciary is independent and is not influenced by the legislature and the executive, and that also we have borrowed from the Constitution of USA. Next is the procedure for the removal of Supreme Court and High Court judges. Now the procedure which has been given for removing the Supreme Court and High Court judges in the Indian Constitution is also borrowed from here. And next comes the powers of President and Vice President. And lastly, the preamble to the Indian Constitution also. So we have borrowed many things from the Constitution of USA. पहला है preamble, दूसरा fundamental rights, तीसरा है independence of judiciary, fourth is the judicial review का principle. Judicial reviews के principle को कहाँ से borrow किया गया है, ये question अक्सर पूछ लिया जाता है. Next is the powers of Vice President and President, and the last one is the removal of Supreme Court and High Court judges, USA के constitutions. Now we move ahead. Canada. Canada के constitution से हम लोगों ने जो feature incorporate किया है, जो कि बहुत ही important है, पहला कि is federation with strong center. The government is divided into 2 categories. Now first is the federal government and second is the unitary form of government. In federal government, there is a clear demarcation of powers between the union and the states, whereas in the unitary form of government, the power resides with the center only. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सेंटर की अपनी पावर दी रहती है और स्टेट्स की अपनी पावर दी रहती है अलग अलग से, और वो उसी पावर्स में वर्क कर सकते हैं. बट यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि द पावर सोली रिसाइड्स विद द यूनियन और द सेंटर. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज़ नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द पावर्स. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पिक्यूलर फीचर को उसने अडॉप्ट किया है और डेवलप किया है, दैट इज़ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. दो देयर is some division of power between the union and states in India, but the union, that is the center, has been vested with more power. Now next is the
procedure of advisory jurisdiction of Supreme Court. Now the President in certain cases of national importance can take advice of the Supreme Court. It is given in Article 143. So वो भी हम लोगों ने Constitution of Canada से लिया है. Last which is important is the residuary power of the center. Now we need to know that center is also given certain residuary powers which are not available to the states. वो भी हम लोगों ने कनाडा से ली है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि है डीपीएसपी का प्रोविजन गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया है. ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ने 3 चीज़ बोरो की है. फर्स्ट इज द ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकेंड इज द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अंडर सर्टेन सिचुएशंस. Both the parliamentary house, that is the Lok Sabha and Rajya Sabha, have a joint sitting. Now it is called by the president, that is summoned by the president and is presided over by the speaker. So वो भी हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है. लास्ट थिंग जो ऑस्ट्रेलिया से, और वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑलवेज आस्क्ड कि कॉन्करेंट लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल में दी हुई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने लिया है. तो ये 3 थिंग्स वी हैव बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. लास्टली यूएसएसआर से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने बोरो की है, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A and it was added by an amendment in 1976, that is the 42nd amendment. 42nd amendment के बारे में I will tell you more later, but 42nd amendment को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे. So next we will talk, next country is Germany. जर्मनी के वीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने जो प्रोविज़न लिया है वो इमरजेंसी का प्रोविज़न है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ़ यू एवर कम अक्रॉस एनी क्वेश्चन कि इमरजेंसी का प्रोविज़न कहाँ से आया है, तो यू विल हैव टू मार्क जर्मनी. नाउ साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट जो कि पार्ट 20 में दिया गया है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट कम्स फ्रांस से हम लोगों ने 2 चीज़ें बोरो की है. फर्स्टली इट इज़ द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज़ an elected head. Like in India, we have a president and who is elected. But if we look at UK, the president, that is the sovereign, the crown is not elected and there is a hereditary monarch. Means अभी अगर क्वीन मोनार्क है वहाँ की, तो नेक्स्ट उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स मोनार्क बन जाएंगे. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में ऐसा नहीं है कि अभी रामनाथ कोविंद है और नेक्स्ट उनके लड़के बनेंगे. देयर इज़ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हम लोगों ने फ्रांस से ली है. नेक्स्ट जो हम लोगों ने फ्रांस से लिया है इज़ द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. प्रियम्बल में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडियाज़ दिए हुए हैं जो कि वी हैव बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस. नाउ लास्ट जापान. दिस क्वेश्चन इज़ रियरली आस्क्ड बट आई केम अक्रॉस इट, सो आई हैव मेंशन इट हियर. फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हम लोग ने बोरो किया है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वी विल डिस्कस इट in further classes.